Good morning, everybody. This is our English literature class and we'll continue Pride and Prejudice by Jane Austen. पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस करे थे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर और आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वॉल्यूम 2 के अंदर थे और वॉल्यूम 2 से स्टार्ट करते हुए आज वॉल्यूम 2 के मतलब हाफ पार्ट एंड वॉल्यूम 3 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोग के पास क्लास लाइव पहुंच रही होगी। स्वागत है सभी का। हैप्पी होली है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड लेट्स गो अहेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। दिस इज सेशन नंबर 2 बेस्ड ऑन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन का बहुत ही फेमस नॉवल है। एक हमारी क्लास हो रखी है एंड दिस इज क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। After Colonel Fitzwilliam and Mr. Darcy arrive at Rosings, Elizabeth dash Elizabeth ने क्या करा उसके बाद? Enjoys her visits to Rosings more than previously, is not allowed to visit Rosings without a proper chaperone, competes with the young ladies for the gentleman's attention, does everything she can to avoid going to Rosings. क्वेश्चन नंबर 41 के लिए राइट आंसर क्या है? एंजॉयज हर विजिट टू रोजिंग्स मोर देन प्रीवियसली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 42। फिट्जविलियम रिवील्स टू एलिजाबेथ, क्या रिवील करता है एलिजाबेथ को? दैट मिस de Bourgh is planning a big wedding, that Mr. Wickham's story about Darcy is not true, that Mr. Darcy recently prevented a friend of his from making a bad marriage, that he is jealous of Elizabeth and Mr. Darcy. कौन सी बात यहाँ पे फिट्जविलियम से पता चलती है? तो ये फिट्जविलियम मिस्टर डार्सी वाला फिट्जविलियम नहीं है, दी अदर वन, कजन होता है ये मिस्टर डार्सी का, कर्नल फिट्जविलियम। और वहां यहाँ पे एलिजाबेथ को एक बात पता चलती है अबाउट मिस्टर डार्सी। एंड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? फटाफट से गैस कर लीजिए। यहीं पे एक्चुअली एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो जो उसकी सिस्टर है जेन और बिंगले, इनके बीच में डिफरेंसेस आए हैं, उसके पीछे रीजन कौन है? मिस्टर डार्सी है। सो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए हमारा राइट ऑप्शन है सी, दैट मिस्टर डार्सी रिसेंटली प्रिवेंटेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फ्रॉम मेकिंग ए बैड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 43। After observing Mr. Darcy and Miss de Bourgh together, एलिजाबेथ ने क्या करा या शार्लेट ने क्या करा? एलिजाबेथ concludes that Mr. Darcy is not in love with Miss de Bourgh. Elizabeth grows even more jealous despite her attempts not to care. Charlotte begs Elizabeth to give up her feelings for Mr. Darcy. Colonel Fitzwilliam decides not to tell Miss de Bourgh of his feelings for her. क्या होता है यहाँ पे? जब एलिजाबेथ ऑब्जर्व करती है मिस्टर डार्सी को और फिर वहां पे वो क्या करती है? शी कंक्लूड्स और शी बिकम्स जेलस, या शार्लेट एलिजाबेथ से कहती है कि भूल जाओ, या कर्नल फिट्जविलियम डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। एलिजाबेथ कंक्लूड्स दैट मिस्टर डार्सी इज नॉट इन लव विथ हर, ये उसको उनकी बातचीत से आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। Elizabeth specifically tells Mr. Darcy how much she loves walking in the park because she knows how much Miss de Bourgh detests walking. She hopes this will make him follow her there. She hopes that he will then avoid the park. He once called her idle and inactive. क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बताना है हमें कि वो स्पेसिफिकली मिस्टर डार्सी को बताती है हाउ मच शी लव्स वॉकिंग इन द पार्क बिकॉज व्हाट इज द रीजन हियर? शी होप्स दैट ही विल देन अवॉइड द पार्क, इसलिए बताया था ताकि वो वहां ना जाए। क्वेश्चन नंबर 45। Before he could fall in love with Elizabeth, Mr. Darcy tells her that he had to. क्या करना होगा मिस्टर डार्सी को?
go over his finances to determine if he could support her, make sure that she was no longer in love with another man, overlook her family situation and connections, get permission from his family. तो यहाँ पे है नरेटिव है डायलॉग है मिस्टर डार्सी की तरफ से. So before he could fall in love with Elizabeth, Mr. Darcy tells her that he had to. क्या करना हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग? सी ऑप्शन. ओवरलुक her family's situation and connections. भूलना पड़ेगा वो चीज. 46. Elizabeth responds negatively to Mr. Darcy's proposal because. तो यहाँ पे मिस्टर डार्सी ने जो प्रपोजल रखा शादी का, उसके लिए एलिजाबेथ ने मना करा. व्हाट इज द रीजन हियर? क्यों मना करा? शी फील्स मिस de Bourgh is better suited for him. She feels he has insulted her. She is in love with another man. She feels that marrying him would be beneath her. तो आपको पता है कि वो वुड बी बीनीथ हर वाली बात नहीं है. ऐसा भी नहीं था कि शी वॉज इन लव विथ अनदर मैन. पहले जो विक्रम वाली बात हुई भी थी, पर वो क्लियर आउट हो गई. दैट उसने खुद से कन्फेस करा कि नहीं, आई वॉज नॉट इन लव विथ हिम. राइट आंसर क्या है? शी फील्स ही हैज इंसल्टेड हर. वो फैमिली वाली बात की मुझे तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा बैकग्राउंड इग्नोर करना पड़ रहा है, प्लस वो सिस्टर वाली बात, प्लस विक्रम वाली बात, तो सारी चीजें मिला जुला के she feels he has insulted her. B होगा राइट आंसर 46 के लिए. 47. In his letter to Elizabeth, Darcy. अब जब यहाँ पे एलिजाबेथ ने मना करा डार्सी को, तो डार्सी ने फिर क्या किया है? एक लेटर लिखा है और एलिजाबेथ को दिया है. आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस लेटर में क्या था. एक्सप्लेन्स द ट्रूथ अबाउट विक्रम एंड अबाउट हिज इनहेरिटेंस विथ बिंगले. Tries to convince her that she should love him, tells her that his relationship with Miss de Bourgh has ended. D. Proposes marriage. 47 में क्या करा था मिस्टर डार्सी ने इन लेटर टू एलिजाबेथ? A option correct है. Explains the truth about Wickham and about his inheritance with Bingley. 48. Elizabeth shares some of the news of Darcy's letter only with. जो वो लेटर था उसमें से कुछ कुछ बातें एलिजाबेथ ने किसको बताई थी? मिसेस बेनेट यानी कि अपनी मदर को, शार्लेट बेस्ट फ्रेंड को, जेन बड़ी बहन को, मिसेस गार्डिनर को. किसको बताया था? क्वेश्चन नंबर 48 में एलिजाबेथ शेयर सम ऑफ द न्यूज ऑफ डार्सीज लेटर ओनली विथ. राइट आंसर क्या है? जेन. ऑप्शन सी जेन. 49. Elizabeth asks her father not to let Lydia go to Brenton. Why? Option A. It would not be fair to the rest of the family who could not go. Lydia's behavior reflects badly on herself and her family. Lydia is too young to go on such a long journey. Mrs. Bennet could not manage the household without Lydia's help. 49 के लिए. तो जब लिडिया जाना चाहती है और एलिजाबेथ उसके फेवर में नहीं है, एलिजाबेथ ने वहां पे रीजन क्या दिया था? क्यों नहीं चाहती थी कि लिडिया जाए? एंड व्हाट इज द रीजन हियर? लिडियाज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन हरसेल्फ एंड हर फैमिली. है ना? टू यंग वाली भी कोई बात नहीं थी, मिसेस बेनेट के हाउस होल्ड मैनेज करने वाला भी नहीं, लिडिया के अपने खुद के बिहेवियर की वजह से. Question number 15. When Elizabeth discovers that she is to visit Pemberley with Gardiners, she. क्या करा उसने? She is delighted at the prospect of a picnic by its beautiful river. She is worried that Mr. Darcy might be there. She is bored because they had seen so many estates on the trip. She worries that her aunt's health was not up to such a strenuous journey. Question number 50. When Elizabeth discovers that she is to visit Pemberley with the Gardiners, क्या हुआ था?
शी इज वरिड दैट मिस्टर डार्सी माइट बी देयर, इसलिए मना करती है कि शायद वहां पे मिस्टर डार्सी होंगे और वो इंटरेस्टेड नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 51. Elizabeth sets off her journey to Derbyshire with her mother and father, the Collinses, the Gardiners, Lady Catherine, and Miss de Bourgh. Question number 51. Elizabeth sets off on her journey to Derbyshire with किसके साथ? याद रखिएगा, the Gardiners, इनके साथ. Question number 52. Elizabeth's first impression of Pemberley is that it is dark and gloomy, smaller than she expected, a home where she would have liked to live, pretentious and reflective of Darcy's excessive pride. जब एलिजाबेथ जाती है पेम्बरले, वहां पे उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, मतलब पहली नजर देख के? That it is dark and gloomy, smaller than she expected, a home where she would have liked to live, pretentious and reflective of Darcy's excessive pride. A home where she would have liked to live. Option number C. 53. Elizabeth's musings about Pemberley are tempered by her thought that she would not have been able to invite Mr. and Mrs. Gardiner there. She is furious at Mr. Darcy. She would have had to live too far from her family. She would have had to live too far from Charlotte Collins. 53 के लिए. Elizabeth's musings about Pemberley are tempered by her thought that she would not have been able to invite Mr. and Mrs. Gardiner there. एलिजाबेथ इज सीक्रेटली प्लीज्ड दैट, किस बात को लेकर के वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुश है. मिसेस रेनल्ड्स इज सो फॉन्ड ऑफ मिस्टर डार्सी. मिसेस रेनल्ड्स एक्सपेक्ट मिस्टर डार्सी टू मैरी कैरोलाइन बिंगली. द स्टाफ रिमेंबर मिस्टर डार्सी एज कोल्ड एंड अनफीलिंग. मिस्टर डार्सी इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एनी मिनट. तो मिस्टर डार्सी के विजिट का उसको बिल्कुल भी इंतजार नहीं था, एंड स्टाफ ने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा था कि मिस्टर डार्सी कोल्ड एंड अनफीलिंग है. राइट आंसर क्या है? मिसेस रेनल्ड्स इज सो फॉन्ड ऑफ मिस्टर डार्सी. Elizabeth is secretly pleased that Mrs. Reynolds is so fond of Mr. Darcy. 55. When Elizabeth introduces Mr. Darcy to the Gardiners, she feels embarrassed that Mr. Darcy should meet more of her relations, triumphant because the Gardiners are richer than Mr. Darcy is, self-conscious because Mrs. Gardiner is so obviously trying to get her and Mr. Darcy together, proud because the Gardiners are so well-mannered and tasteful. The question number 55. When Elizabeth introduces Mr. Darcy to Gardiners, she feels, option D, proud because the Gardiners are so well-mannered and tasteful. 56. Of all his attentions, Elizabeth is most flattered when Mr. Darcy introduces her to his sister, invites Mr. Gardiner to go fishing, holds a ball at Pemberley in her honor, offers his house in London for their return trip. 56. सबसे ज्यादा कब फ्लैटर हुई थी? जब वो उसको अपनी सिस्टर जॉर्जियाना के साथ इंट्रोड्यूस करता है. Of all his attentions, Elizabeth is most flattered when Mr. Darcy introduces her to his sister. 57. In Lambton, the Gardiners and Elizabeth discover that Mr. Wickham kept a small house there, had many debts, was once mayor, served in the local regiment. 57 के लिए क्या पता चलता है उन्हें मिस्टर विक्रम के बारे में? दैट ही हैड मेनी डेट्स. इन लैम्पटन द गार्डनर्स एंड एलिजाबेथ डिस्कवर दैट मिस्टर विक्रम हैड मेनी डेट्स. क्वेश्चन नंबर 58. Elizabeth determines that Georgiana Darcy is sickly and cross, shy and pleasant, proud and disdainful, as ill-mannered as the Bingley sisters. क्या इंप्रेशन बनता है जॉर्जियाना डार्सी का एलिजाबेथ के ऊपर? दैट जॉर्जियाना डार्सी वॉज
shy and pleasant. 59. It is clear to Elizabeth that Mr. Bingley and Georgiana Darcy are barely on speaking terms, very much in love with each other, contriving to keep Elizabeth and Mr. Darcy apart, friendly but not close. 59 के लिए. It is clear to Elizabeth that Mr. Bingley and Georgiana Darcy are friendly but not close. 59 के लिए जी. When Miss Bingley says, "Pray, Miss Eliza, are not the Dashire militia removed from Meryton? They must be a great loss to your family." She is hinting that the Bennets had been under their protection from Mr. Bennet's creditors. A relationship existed between Elizabeth and Mr. Wickham. Bennet women were not fit to marry men of higher status than the officers. She knows the truth about Georgiana's near elopement with Wickham. जब मिस बिंगली ये वाली बात कहती है, शी इज हिंटिंग दैट ए रिलेशनशिप एग्जिस्टेड बिटवीन एलिजाबेथ एंड मिस्टर विकम. वो जो पहले उनके आपस में दोस्ती थी, बातचीत थी, उस चीज के ऊपर हिंट कर रही थी वो. 61. Elizabeth receives a letter from Jane that reveals that Jane is planning to marry Mr. Bingley. Kitty has become pregnant. Lydia has run away with a man. Mary has joined a convent. 67. एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है जेन का और उसमें क्या पता चलता है. ऑप्शन सी, लिडिया हैज रन अवे विथ अ मैन. और ये मैन कौन होगा? वही विक्रम, मिस्टर विक्रम. लिडिया हैज रन अवे विथ मिस्टर विक्रम. Question number 62. Elizabeth is heartbroken after telling the news to Mr. Darcy because he wanted his sister to marry Mr. Bingley. She fears he considers her family disgraceful. He had tried so hard to keep the two lovers apart. He says he never wants to see her again. तो वो पहले भी लिडिया को लेकर के कंसर्न थी कि उसका बिहेवियर उसकी फैमिली के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे भी सेम डर है एलिजाबेथ को. शी फियर्स ही कंसिडर्स हर फैमिली डिस्ग्रेसफुल. कि अरे तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 63. Soon after receiving Jane's letter, Elizabeth leaves Lambton to travel to London to try and find the lovers, go home to her family, follow Mr. Darcy and try to explain what has happened, travel to Brighton to talk to her sister. Question number 63 के लिए. जेन का लेटर मिलते ही एलिजाबेथ लीव्स लैम्पटन टू फॉलो मिस्टर डार्सी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड. सॉरी, गो होम टू हर फैमिली. तुरंत वो घर के लिए जाती है, टू बी विद द फैमिली. 63 के लिए ऑप्शन बी. From Mr. Gardiner's letter, Mr. Bennet and Elizabeth surmise that Mr. Darcy has arrived in London. Mr. Gardiner has been unable to find Mr. Wickham. Mr. Gardiner has settled all of Wickham's debts. Mr. Bingley will soon be returning to Netherfield. Mr. Gardiner has settled all of Wickham's debts. Question number 64 के लिए option C. 65. After observing her mother's reaction to Mr. Gardiner's letter, Elizabeth concludes that her mother is depressed, clever, ridiculous, very much relieved. तो मदर का रिएक्शन जब वो देखती है मिस्टर गार्डनर्स की लेटर को देख के, एलिजाबेथ क्या कंक्लूड करती है? That her mother is ridiculous. Question number 66. The one thing that would have allowed the Bennets to retain Longbourn was if Mr. Bennet had made more money. Mrs. Bennet had not spent all of their money. They had had a son. Mr. Bennet and his brother had not quarreled. बेटा, क्योंकि इनकी पांचों बेटियां ही थी, दैट्स वाई ये इशू था. अगर उनका बेटा हुआ होता तो फिर इन्हीं के पास रहता सारा कुछ. ऑप्शन सी. Mr. Bennet is finally persuaded to sell Longbourn, welcome his wayward daughter into their home, move to London, buy the clothes and trappings Mrs. Bennet so desperately wants. 67.
Mr. Bennet is finally persuaded to welcome his wayward daughter into their home. 68. Mrs. Gardiner's letter reveals to Elizabeth that Mr. Wickham is a scoundrel, Mr. Darcy is a hero, Mr. Bingley is married, Mr. Gardiner is retiring. मिस्टर डार्सी इज हीरो क्योंकि ये जो सिचुएशन थी लिडी और विकम के भागने की इसको सेटल करने के लिए क्रेडिट किसको जाता है डार्सी को जाता है मिस्टर डार्सी इज ए हीरो Elizabeth and Jane try unsuccessfully to convince themselves that क्या करते हैं they do not need to marry to be happy they are happy for Mr. Bingley's marriage they are not embarrassed by Mrs. Bennet's behavior they are not in love they are not in love ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं आई एम नॉट इन लव 70 लेडी कैथरीन डी बर्ग कम्स टू लॉन्गबॉर्न किस लिए आती हैं सो लेडी कैथरीन को डर लगने लगता है कि मिस्टर डार्सी तो निकल गए मेरे हाथ से अब क्या होगा मेरी बेटी का टू इंसिस्ट दैट एलिजाबेथ नॉट मैरी मिस्टर डार्सी टू पे हर रिस्पेक्ट्स टू मिसेस बेनेट on her way to visit the Collinses at Lucas Lodge to attend Jane's wedding. जी सही है पहला वाला ऑप्शन टू इंसिस्ट दैट एलिजाबेथ नॉट मैरी मिस्टर डार्सी प्रॉमिस करोगे तो मिस्टर डार्सी से नहीं करोगी मैरिज मिस्टर बेनेट finds Mr. Collins' letter to be very irritating, smug, depressing, humorous. 71. Mr. Bennet finds Mr. Collins' letter to be very humorous. 72. Before she can marry Mr. Darcy, Elizabeth feels she must make his sister like her, convince her family that she knows what she is doing, put together a much better wardrobe, ask her father and her uncle for a more substantial dowry. 72 के लिए Before she can marry Mr. Darcy, Elizabeth feels she must. क्या करना चाहिए? Make his sister like her, convince her family that she knows what she is doing, put together a much better wardrobe, ask her father and her uncle for a more substantial dowry. 72 के लिए convince her family. Correct है? 73. Elizabeth tells Mr. Darcy that he fell in love with her because she was impertinent, kind to his sister, educated, engaged to another man. So कौन सी ऐसी क्वालिटी थी एलिजाबेथ की दैट्स व्हाई मिस्टर डार्सी फेल इन लव विथ हर राइट आंसर ए impertinent 73 के लिए ए 74 After Elizabeth's wedding, Lydia writes to her to congratulate her and invite her and Mr. Darcy to visit, announce that she is having a baby, announce that she is leaving her husband, ask for money. एलिजाबेथ के वेडिंग के बाद लिडिया उसको लिखती है किस लिए ऑप्शन डी आस्क फॉर मनी एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन After their marriage, Elizabeth and Darcy's closest friends are the Robinsons, the Collinses and Lydia, Kitty, Mr. Wickham and Colonel Fitzwilliam, or last option, the Gardiners and Georgiana Darcy. उनके मैरिज के बाद एलिजाबेथ और डार्सी के क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं ऑप्शन डी द गार्डिनर्स एंड जॉर्जियाना डार्सी तो ये थे हमारे क्वेश्चंस प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर बेस्ड 2 क्लासेस हैं दोनों कवर कर लीजिएगा टोटल 75 क्वेश्चंस और सीक्वेंस में है चैप्टर वाइज हैं तो ये आपके इवैल्यूएशन प्लस योर प्रिपरेशन में दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कल तो नहीं मंडे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्कारलेट लेटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड